नहीं, इधर लिमिटेड कैपेसिटी है ना, वो तो उतना ही कैपेसिटी के लिए यूज कर रहा है। हाँ हाँ, इसलिए 5 रुपए ले लिया हमारा कैलकुलेशन के लिए। अरे 60,000 का यूनिट में ही खेलने का है ना तुमको, तो इसलिए 5 रुपए का चार्ज रखा है। क्या? हाँ, लेकिन वसूल कितने में से करना है वो तो क्लियर है ना। अरे जब भी मेरे को मालूम है वो 3 लाख रुपए में 60,000 ही यूज करने वाला हूं, तो उतना ही लेगा ना मैं। फाइन, हेलो। हाँ, काउंटर क्लोज। बाकी डिस्कशन एंड ऑफ ब्रेक में आपको पूछना है पूछ सकते हैं। चलो डन, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, XYZ लिमिटेड विथ अ टर्नओवर ऑफ 50 crores। वर्डिंग्स देख लो ध्यान से। टर्नओवर ऑफ 50 crores ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वर्ड देख लो प्रीवियस ईयर, and borrowing rupees 1 crore during any time in the previous year, wants to avail exemptions available in adoption of accounting standards applicable to companies for the year ended 31st March 12. Advise the company on exemptions that are available as per the company's rule 2020-21. 1 मिनट का टाइम है, सोच लो कि कौन सा प्रोविजन। यू कैन यूज द नोटबुक, ओपन बुक है। ओके, बोलिए एनीबडी। हाँ चलो, फर्स्ट बेंच शी सेइंग आई विल स्टार्ट। हाँ बोलिए। सुन लो, इसमें कुछ प्लस माइनस करना है क्या? He is saying it is an SMC. Is it an SMC? It's an SMC as the turnover is less than 250 crores and the borrowings are less than 50 crores at any point during the previous year. बराबर? And the other conditions like assumed to be satisfied, not given, so we'll say nothing, matlab there is no violations. So it will fall under the heading of what? SMC. So it can avail the exemption. Yes, it can avail the exemptions from applying accounting standard. Clear till you? तो प्रोविजन लिखा है, 2 कैटेगरीज, कंडीशंस पूरा लिखो,
लेस देन है तो उसको एग्जम्पशन मिल जाएगा। आर वी क्लियर? जाओ, गॉट नो? इसमें कंक्लूजन नहीं लिखा है, शायद कंक्लूजन लिख देना। सिंस एक्स वाई जेड टर्नओवर इज 50 करोड़ डज नॉट एक्सीड इट इज एन एसएमसी। उसके बाद लिख देना देयरफॉर, नीचे लिख दो देयरफॉर एक्स वाई जेड लिमिटेड, देयरफॉर एक्स वाई जेड लिमिटेड can avail exemptions, in the adoption of accounting standards, applicable to a small and medium sized company, applicable to a small and medium sized company. Clear? Next, question number 2. A company was classified as non-SMC in 21-22. In 22-23, it has been classified as SMC. The management desires to avail the exemption/relaxation available to SMCs in 22-23. However, the accountant of the company does not agree with the same. Comment. बोलिए. Any one of you? So he is saying I'll start. सुनिए please. Is ready बोलता है. ओके, और क्या लिखना है? The exemption/relaxation will be applicable from when? 2024-25. To 24-25? 24-25 if it remains an SMC in 22-23 and also in 23-24. Clarity? समझ में आ रहा है क्या? So that is how we write it. So next one, question 3. An organization whose objects are charitable, religious, believes that the accounting standards are not applicable to it since only very small proportion of its activities are business in nature. Comment. As I said, typical type of questions कवर कर लो, इजी हो जाएगा हो। और ये सब पढ़ के जाना, किधर आ जाएगा 5 मार्क का क्वेश्चन तो इजी हो जाएगा। डोंट इग्नोर देम। एक एक पेज में हार्डली कुछ है, हम नॉर्मली उसको इग्नोर कर रहे हैं, उसको लगता है बेवकूफ है, और उधर हर एक मार्क काउंट करेगा वहां पर। हाँ बोलिए, एनीबडी? क्या हो गया? कैन दे क्लेम एग्जम्पशन? क्यों? When is it exempted from application of accounting standard? It has to be
not in, matlab no part of its activity should be industrial, commercial or business, then only it is excluded from the application of accounting standard. But even if a small portion is in business or commercial or industrial, then AS is applicable to all the activities, including the activities which are not industrial, commercial or business. समझ में आ रहा है क्या? So that is how we write it. हाँ बोलिए. Any sale transaction will be business. Got it? Next, मल्टी MCQs में आ जाइए. MCQs 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन. चलो 2 मिनट का टाइम है. Will ask any one of you. एक बार भी करो. बेटर मतलब तो कमर्शियल कर रहे हैं ना. फिर बैटर में भी कमर्शियल सब्सटेंस हो सकता है ना. तो फिर ओके डन. चलो स्टार्ट करते हैं हम. अरे मैं वही बोल रहा हूं, आप लोग क्यों ऐसा माइक्रो लेवल पे जा रहे हैं? एक ही बार किया मैंने, गलती गलती है, खत्म हो गया बात. अभी एक बार आप बोले अरे मैं फर्स्ट टाइम लाइफ में सिग्नल तोड़ा, तो क्या बोले माफ? आप फर्स्ट टाइम सिग्नल तोड़ा कि 2 बार सिग्नल तोड़ा कि 10 बार तोड़ा? पेनल्टी इज पेनल्टी. आप मालूम पड़ा रिटर्न का डाइट वॉयलेट कर रहे. 30 सितंबर का ड्यू डेट है, आप नहीं भर रहे. आप 1 अक्टूबर रात को 1 बजे भर रहे हैं, तो वायलेशन इज वायलेशन. डन फिनिश्ड. चलो फर्स्ट वन, कम ऑन. नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज विच आर नॉट लेवल 1 whose turnover excluding other income exceeds dash rupees but does not exceed 250 crore in the immediate preceding year are classified as level 2 entities. Exceeds 50 but does not exceed 250. याद आया? Next, following accounting standard is not applicable to non-corporate entities falling in level 2 in its entirety. 17 is on segment reporting. Segment of business. Are you getting my point? Next, बाकी का तो accounting standards are applicable. They are normal ones.
जैसे AS10 है, PP या इन्वेंट्रीज है या इन्वेस्टमेंट्स है. नेक्स्ट, all corporate non-corporate entities engaged in commercial business, industrial reporting entities whose turnover exceed 250 in immediately preceding accounting year are classified as. more than 250 आ गया तो level 1 में आ गया आप. next, all non-corporate entities engaged in commercial business having borrowings including public deposit in excess of 2 crores but not more than 10 crores. Level 3 entity. Next, SMC means a company which may be a bank, financial or insurance. Correct? Wrong? Turnover does not exceed 250 in the immediate preceding year. Turnover does not exceed 50 crore. Turnover does not exceed 500 crore. So which condition is right? Only sub point B. Are we clear? Done? Clear hai? Chalo, fine. So that finishes that chapter. खत्म हो गया स्टोरी उसका.